Shri A. Nagraj. Okay. So we are live now. Good morning. Welcome everyone. So we are reading Vyavahaaraatmak Janvaad, Behavior-Centered Conversations. Today on 13th August, we'll begin from page 97 of the original Hindi book. Now this is start of a new chapter. Okay, so we'll straight away go there. Give me a moment. So this is chapter 7. The name of the chapter is Vyavahaarvadi Karyakala, behavior-oriented activities. So as we have been doing from last week, I'll request one of you, जिनको हिंदी भी आती हो, इंग्लिश भी आती हो, तो एक-एक पैराग्राफ को पढ़ के and then we'll talk about it. Any volunteers? Yes, भैया. Good morning to all. Yeah, good morning, किशन भाई. मानव व्यवहार अपने संपूर्ण रूप में या अपनी संपूर्णता के अर्थ में मानव संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था ही है. मानवीय आचरण संस्कृति, सभ्यता का प्रमाण रूप होना पाया जाता है. मानव संस्कृति स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में प्रमाणित होती है. सभ्यता का स्वरूप, सभ्यता का प्रमाण, संबंध, मूल्य, मूल्यांकन उभय तृप्ति के रूप में होता है. संस्कृति, सभ्यता, इन दोनों के आधार पर नैतिकता का स्वरूप, तन, मन, धन रूपी अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा स्पष्ट हो चुका है. इसके आधार पर मानवतापूर्ण आचरण स्पष्ट हो चुका है. इस मुद्दे पर लोक स्वीकृति की आवश्यकता है ही ये जन चर्चा का मुद्दा है. Human behavior in its awakened form or for its awakening is only the culture, civility, law and systems. Evidence of culture and civilization is in the form of human conduct. Evidence of culture is in the form of on wealth, on spouse, and kindness in work and behavior. Evidence of civilization is in the form of values in relationships, their evaluation and mutual happiness. Righteous use of security of resources in the form of body, mind and wealth is already. I think Kishan bhai got disconnected. Is it correct? I can't see him. We joining that. He is rejoining. Join. किशन भाई आप म्यूट पे हैं. Sorry, it was disconnected due to network issue. No problem, no problem. So you begin from this right use and security of resources. Okay, I think we can complete it ourselves. So righteous use and security of resources in the form of body, mind and wealth is already clear on the basis of culture and civility, not civilization. Based on this, the humane conduct is also clear. This certainly needs to be accepted by the masses. This is a point of discussion. So I think that reading a paragraph is helping all of us. We got this feedback in the last meeting also, that we get a sense of the whole paragraph, meaning of the whole paragraph when we read it completely. And at the same time, now we can look at it sentence by sentence. So मानव व्यवहार अपने संपूर्ण रूप में या अपनी संपूर्णता के अर्थ में मानव संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था ही है. So human behavior in its awakened form
or for its awakening. Okay, so these are two different things. One is when the awakened tradition is there. Okay, जागृति पहले से ही है, awakened tradition पहले से ही है. उस समय भी कुछ मानव व्यवहार होगा. Some behavior, some human interactions will be there, and till the time the awakened tradition is not there, and all of us are working towards the goal of awakening. So then for awakening also we have, we do behavior, we have human interactions. Okay, so at this stage in prevailing times, our state is that we are working for awakening. Okay, and then once many people will be in the state of awakening, then also there will be behavior. So these are the two things which are mentioned here: human behavior in its awakened form or for its awakening. Itna, I think it is clear. So what is human behavior? It is only the culture, civility, law, and systems. Okay, so the words, corresponding words in Hindi are Sanskriti, Sabhyata, Vidhi, Vyavastha. So Sanskriti, we are saying culture. Sabhyata, we are saying civility. Vidhi is the right way of doing something. Okay, so at the moment we are using the word law, but let it be clear in our minds that this law does not mean the man-made laws only. Okay, or it is not even being said that all man-made laws are humane laws. Okay, but for want of a better word, we are using the word here, law. If there is any other option you guys can think of now or later, like probably we want to review it. I mean, I personally think that law does not really translate to vidhi in true sense of the word. But as long as we get the sense of the word, so vidhi, when we say in Hindi, it is like, the natural way of working. Okay. So, and then what is the natural way is the right way. So that right part is very important in vidhi. Law to that extent, how we are trying to match is a lot of natural laws when science has sort of, discovered and put them in words, they are also called laws. Okay, so they are, corresponding to nature. Okay, we have the law of gravity, we have laws of motion. Okay, so in that sense, the law actually corresponds to how things work in nature. Okay, but then when we talk about humans, there is a right way of working. So that sense of right, we can all see whether it is captured by the word law or do we have some better option. And then Vyavastha is, there are two words which we are using, depending on the context. One we are now using systems and one we have been using orderliness. Okay, so again, Vyavastha is that when any system has many components, all those components work in alignment with each other and all of them work rightly, then we have a properly working system. Usko Hindi mein kaha Vyavastha. When all the components are not working properly, then we have avyavastha. Then we have actually disorderliness. Okay, so orderliness and disorderliness also we are using for vyavastha and avyavastha, and then sometimes it looks like ये व्यवस्था जो है ये systems से भी capture हो जाता है. So the system itself is not working. When we say, it means that some or many components of the system are not working properly, then we generally say the system itself is not working properly. And for example, car has many dozens of important components, and when a few of them are not working, it does not mean that none of the components of car is working. But if a few of them are not working, then we cannot use car as a car. Right, so then we say car is not working.
So car is not in order, so to say. Sometimes that language comes. So व्यवस्था जो है वो उसको इसके साथ में भी systems के साथ में ऐसे relate किया है. तो संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, culture, civility, law and systems. Then we are saying मानवीय आचरण संस्कृति सभ्यता का प्रमाण रूप होना पाया जाता है. Evidence of culture and civility is in the form of humane conduct. Okay, so what is the evidence that there is a culture and there is civility? Humane conduct itself is the evidence. Okay, that tells us whether there is whether it is culture or it is what we, I don't know whether we can use the word, whether it is culture or whether it is unculture, whether it is civility or whether it is uncivil. Okay, so what is its evidence? The evidence is humane conduct. मानव संस्कृति स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में प्रमाणित होती है. Evidence of culture is in the form of own wealth. तो स्वधन को righteous wealth भी use करते हैं, and then like we are drawing with own wealth also. तो उसको स्वधन कहा. स्वनारी, स्वपुरुष is own spouse. So the purity in marital relationships, इसको जो है वो own spouse का, इसको righteous marital relationship भी we can say it. And दयापूर्ण कार्य व्यवहार. So दयापूर्ण कार्य व्यवहार is in kindness in work and behavior. So evidence of culture is in the form of own wealth, own spouse and kindness in work and behavior. सभ्यता का स्वरूप, सभ्यता का प्रमाण, संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति के रूप में होता है. Okay, so संस्कृति की बात हो गई in the last two sentences. Now we are shifting to सभ्यता. So evidence of civility. Earlier we were using civilization, but now we are using civility. So evidence of civility is in the form of values in relationship, their evaluation and mutual happiness. संस्कृति सभ्यता इन दोनों के आधार पर नैतिकता का स्वरूप, तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा स्पष्ट हो चुका है. Righteous use and security of resources in the form of body, mind and wealth is already clear on the basis of culture and civility. इसके आधार पर मानवीयतापूर्ण आचरण स्पष्ट हो चुका है. Based on this, the humane conduct is also clear. इस मुद्दे पर लोक स्वीकृति की आवश्यकता है ही. This certainly needs to be accepted by the masses. Actually, accepted is not like a compulsion or a perforce kind of thing that it must be accepted, but the sense is that if it is not accepted, then human goal will not be achieved. It is not possible to, or the human goal is not realizable. So this certainly needs to be accepted by the masses. इस मुद्दे पर लोक स्वीकृति मतलब everyone or the masses or the common man, everyone has to accept it. Only by rarely by someone accepting it and living by it, then society impact will not be seen. यह जन चर्चा का मुद्दा है. This is a point of discussion. This is this paragraph sentence by sentence. Any comments, any observations, general understanding में या translation में? भैया it's good, बढ़िया है. It is straightforward. It is basically talking about humane conduct, and we have often drawn it in PowerPoint presentations that humane conduct has three components: values, character, and ethics. मूल्य, चरित्र और नैतिकता. तो इसमें इन तीनों चीजों को ही जो है वो बाबा जी ने अब संस्कृति सभ्यता के साथ में रिलेट कर.
जो बताया है वैसा करते हैं। तो वैल्यूज जो है वो इसमें रिलेशनशिप्स में आ गया, तो वैल्यूज वाला पार्ट भी आ गया। ओके, ये स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दिस इज द कैरेक्टर एस्पेक्ट। ओके, एंड देन द राइट यूज एंड ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज द पॉलिसी पार्ट और द एथिक्स पार्ट। मूल्य, चरित्र, नैतिकता, values, character and ethics, all these three components combined together, we are saying humane conduct. Okay, so it is concluded as based on this the humane conduct is also clear. Okay, good. Yeah, we can move to the next paragraph. So we please पढ़ दीजिए कोई। ठीक है भैया, मैं पढ़ देती हूँ। जी दीदी। मानवीयता पूर्ण आचरण को हर विधा में पहचानने की विधि सहित संविधान मानवीय संविधान है। मानव परंपरा के लिए आचार संहिता ही आवश्यकता बनी ही रहती है। मानवीय आचार संहिता को क्रम से स्पष्ट कर लेना ही अपने आप में जनमानस के लिए मानवीय महत्वपूर्ण उपलब्धि है। The Constitution, which has the ways to appreciate humane conduct in all aspects, is indeed a humane constitution. Need for a code of conduct is always there in human tradition. Getting step-by-step clarity about the humane code of conduct in itself is an achievement for humankind. Okay, so it's a small paragraph, but very thought-provoking. मानवीयता पूर्ण आचरण को हर विधा में पहचानने की विधि सहित संविधान मानवीय संविधान. So I think it is captured well here in the translation also. The Constitution, which has the ways to appreciate humane conduct in all aspects, है ना, मानवीयता पूर्ण आचरण को हर विधा में पहचान पाए, ऐसा संविधान ही मानवीय संविधान. Okay, so the Constitution, which has the ways or in which the ways are incorporated so as to appreciate the humane conduct in all aspects, is indeed a humane constitution. मानव परंपरा के लिए आचार संहिता की आवश्यकता बनी ही रहती है. Need for a code of conduct is always there in human tradition. मानवीय आचार संहिता को क्रम से स्पष्ट कर लेना ही अपने आप में जनमानस के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है. Getting step-by-step clarity about the humane code of conduct in itself is an achievement for humankind. So I think that I personally grappled with this concept a lot in my personal life journey till the time I came across the content of Madhyas Darshan. I think, you know, off and on at some point or the other, all of you also, all humans actually probably go through this phase when we in our interactions feel like that things are not going right, and we tell the other person with whom we are, you know, behavior is going on, with whom we are interacting, that this is wrong, and the other person insists that it is not wrong. Okay, and the dispute is there, but we do not have any basis to resolve the dispute. We insist that we are right, the other person insists that he or she is right, and then we don't have any basis on which right or wrong can be defined. And then here what we realize, the gap which I realized after, you know, while I am studying Madhyas Darshan, is that around us most of the times, including constitutions and including let's say other inputs that we get from spiritualism also, it is the wrong part which is highlighted again and again. Okay, ये मत करो, ये मत करो, ये करना गलत है, ये करोगे तो ये सजा मिलेगी.
Okay, do not do this, do not do this. This is wrong. If you do wrong, you will get punishment. Okay, even constitutions are compilation of these things. Okay, if you rob a bank, you can go to jail, prison for 20 years. Okay, but if you do a small theft, you will go to prison for only 2 years. So you do one type of wrong, you get smaller punishment. You do a bigger wrong, a serious wrong, you get more punishment. You kill someone, you will probably be killed. Okay, so wrong is defined, and how wrong will be handled, that is defined. So अमानवीयता को हमने पहचाना है, और हमारे सारे के सारे संविधान अमानवीयता को हैंडल करने के लिए बने. The constitutions are handling inhumaneness. What is humane is generally missing. And what is the right conduct, the humane conduct, ये constitutions में capture नहीं हुआ. Am I right in this interpretation? आप लोग भी इस चीज को feel कर पा रहे हैं? Please, it will be good to hear, thoughts of, some of you also on this. कहीं पे, it should not happen that I have my own way of thinking and, like maybe I am alone, but it's good to discuss. When you look at constitutions, is it visible to all of us? Like it will be good to hear from some of you. Babaji is emphasizing that this right conduct, the humane conduct, okay, these things are missing. Okay, even from constitutions and from other inputs also. That's why we are not able to resolve many things. Okay, humankind has identified the wrong which we should not be pursuing, but then what is the right that we have to pursue? That is vague, actually. That is not clear. Is it the right conclusion? I agree. I think even in my own life, it's, or for many people, it's easier to see what is wrong. If you did something wrong, this is bad. But yeah, paving or clearly giving the path for righteously living or living well is definitely not clear. So I do agree that the need for the constitution is there. And before Madhyas Darshan, I don't think I had really considered any such a thing, or the importance of a constitution, or that there could be universal constitution. So I think it's very valuable to understand that. Good. Thanks for sharing. Anyone else also? Yeah, I would like to share Yes. that. Yeah, please. The humane conduct, I did not think in terms of the constitution, like politics. I thought in terms of maybe religious or spirituality, that what is humane conduct, and usme bhi, as you said, what is wrong is more emphasized, but what is right, it was very vague. And definitely in terms of politics or the political system, I did not think about it earlier. Yeah. So Babaji has sort of, related everything, has integrated everything with each other. Okay, so political system is one part of it. Okay, but then we have families also. So maybe they did not capture it in the country's constitution, but within our families, is this clarity there? Okay, so then we realize that in families also this clarity is not there. Okay, so then all across, everywhere in the society, this clarity is missing. So what was the collective task of humankind to do? Okay, this is the collective task this humankind has to do. Okay, this clarity of right and wrong. Wrong has been identified. What is right? Okay, that is missing. So here, in the constitution, the right, the humane aspects need to be included. This is what is being said here. So we'll repeat it again now. I'll reread it. The constitution, which has the ways to appreciate
humane conduct in all aspects is indeed a humane constitution. Okay. So if it is, it just skips the humane conduct. It just focuses largely on the inhumane conduct, and then spends a lot of time and energy and thought to describe how to handle the inhumane conduct. Then is it indeed a humane constitution or humane thought process? That we have to, this is a food for thought for all of us. So the constitution, which has the ways to appreciate humane conduct in all aspects, is indeed a humane constitution. Need for a code of conduct is always there in human tradition. है ना, code of conduct को कह रहे हैं आचार संहिता. And this is a like a very popular phrase. हिंदी में इसको आचार संहिता कहते हैं, इंग्लिश में code of conduct. So need for a code of conduct is always there in human tradition. Okay, wherever we go, we talk about code of conduct. Okay, in office there is a code of conduct. In neighborhood there is a code of conduct. In family there is a code of conduct. Okay, in aircraft there is a code of conduct. So wherever we go, there is a code of conduct. So need for a code of conduct is always there in human tradition. Getting step-by-step clarity about the humane code of conduct in itself is an achievement for humankind. कि मानवीय आचार संहिता को क्रम से स्पष्ट कर लेना ही अपने आप में जनमानस के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है. Very small paragraph, but very, very powerful. I personally found it like very thought-provoking. We can go to the next paragraph. Who will read it? मैं पढ़ देता हूँ. हाँ जी दिव्य, प्लीज. मानव अपने में बहुमुखी प्रवर्तनशील है. ऐसे प्रवर्तन में परिवार व्यवस्था में भागीदारी और समग्र व्यवस्था में भागीदारी प्रधान कार्यकलाप है. आचरण पूर्वक ही हर मानव हर क्रियाकलापों को कृतकारित अनुमोदित विधि से कायिक, वाचिक, मानसिक रूप को व्यक्त कर पाते हैं. परिवार के बिना मानव की पहचान होती नहीं है. हर मानव किसी परिवार का अंगभूत होना पाया जाता है. इसके अलावा कोई पहचान भी नहीं होती है. किसी संस्था में भागीदारी भी परिवार संस्था में भागीदारी है, तभी व्यक्ति की पहचान हो पाती है. जागृत मानव परंपरा में परिवार की पहचान अपने आप में संपूर्ण प्रकार से सम्मान संपन्न हो जाती है, क्योंकि हर परिवार में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व का प्रमाण सदा बना ही रहता है. इससे अधिक उपलब्धि की आवश्यकता नहीं रह गई है. यही मानव परंपरा में से के लिए परम लक्ष्य और उपलब्धि है. इसी में जीवन कांक्षा, मानव कांक्षा ओतप्रोत विधि से सफल होना पाया जाता है. Humans in themselves are quite versatile. Participation in family orderliness and in overall orderliness is the main activity out of this versatility. It is only in their conduct that humans are able to express all their actions in physical, verbal, mental form by way of doing, getting done, and assenting. A human being has no identity without a family. All humans are found to be an integral part of some family. There is no other identity. Participation in an institution is also participation in the family institution, and this then becomes the basis of their identity. In a human tradition, the family in itself is respectably identified because all families are continuous evidence of resolution, prosperity, fearlessness, and coexistence. Nothing more than this is needed. This is the ultimate goal and achievement in, by, for human tradition. It is when Jivan expectation and human expectation are intertwined with this that they are found to be successful. Good. Thank you, Divya. Thank you. So we can read it
Now, line by line. So मानव अपने में बहुमुखी प्रवर्तनशील है. Bahumukhi is like multifaceted. If we look at the dictionary meaning, but then here, like what I think the sense we are getting is Bahumukhi pravartanshil hai, like they are very versatile. Okay. Versatile is they can do a lot of things. This is what is meant by Bahumukhi pravartanshil hai. So, when it comes to doing, we use in the normal language also. Sometimes I wear the husband cap, sometimes I wear the driver cap, sometimes I wear the brother or sister hat or cap. So this is like, we sort of, we are in different roles from morning to evening at different times. I go to office, I wear a different hat, like, so this is the sense which I get from Bahumukhi Pravartanshil. Okay, so humans in themselves are quite versatile. ऐसे प्रवर्तन में परिवार व्यवस्था में भागीदारी और समग्र व्यवस्था में भागीदारी प्रधान कार्यकलाप. Participation in family orderliness and in overall orderliness is the main activity out of this versatility. So I wear different hats, but then is there a convergence also? Is there a commonality in that also? Yes. So the commonality is that whatever hat I wear, I am participating in the family orderliness and in the overall orderliness. समग्र व्यवस्था, परिवार व्यवस्था और समग्र व्यवस्था, है ना. ये वाले वर्ड बार बार आते हैं. परिवार व्यवस्था में भागीदारी और समग्र व्यवस्था में. So participation in family orderliness and in overall orderliness is the main activity out of this versatility. आचरण पूर्वक ही हर मानव हर क्रियाकलापों को कृत कारित अनुमोदित विधि से कायिक वाचिक मानसिक रूप को व्यक्त कर पाते हैं. ओके, तो दो चीज आ गई इसमें. कृतकारित अनुमोदित भी आ गया, कायिक वाचिक मानसिक भी आ गया. सो आचरण पूर्वक ही. Okay, it is only in their conduct that humans are able to express all their actions. Okay, now actions are of three types. है ना, सारे कार्यकलाप जो है, सारे कर्म जो है, वो कृत कारित अनुमोदित और कायिक वाचिक मानसिक रूप से चलते हैं. So all their actions in physical, verbal, mental form by way of doing, getting done, and assenting. Okay, a few sessions ago, we came across these words, Krit Karit Anmodit, and as far as I remember, this is where what we narrowed down. Krit is what I do myself. Karit is what I get done by others. Okay, but then responsibility still lies with me. Okay, just because someone else has done using his or her hands does not mean that the responsibility lies with them. Okay, if they are doing it my instructions, I am in that doer status. So karit is when on my behalf someone else does something, on my saying someone else does something, and anumodit is when I assent to something, when I agree to something, when I accept something. Okay. So when I approve of something. So it is only in their conduct that humans are able to express all their actions in physical, verbal, mental form by way of doing, getting done, and assenting. परिवार के बिना मानव की पहचान होती नहीं है. A human being has no identity without family. हर मानव किसी परिवार का अंगभूत होना पाया जाता है. All humans are found to be an integral part of some family. इसके अलावा कोई पहचान भी नहीं होती है. There is no other identity. Okay, identity is with the family. And now in the next sentence, Babaji is explaining, किसी संस्था में भागीदारी भी परिवार संस्था में भागीदारी है, क्योंकि तभी व्यक्ति की पहचान हो पाती है. Participation in an institution is also participation in the family institution. Okay. An institution is also like a family. And most of the problems which I see now is because we
We do not consider institutions to be families. That is why the problems are coming. So Babaji ने जो 10 सोपानी व्यवस्था, that 10 stage system जो बताया है, which will be covered in detail in this chapter. Okay, this is a long chapter, around 30 pages. So the last 20 pages are Babaji is describing the Sopani Vyavastha, the 10-stage self-governance system in detail. The first step, the second step, the third step, fourth step. On every step, Babaji is talking about, generally speaking, 1, 2, 3 pages Babaji is devoted to every step. So उसको जो परिवार व्यवस्था बोल रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली मान करके चल रहे हैं. उसका एक जो मॉडल जो है वो इमेजिनेशन बाबाजी is putting in our mind through that. So an institution is also a family. Okay. And there the person's, let's say, conduct is evaluated. Okay. So it is not only the family, the way we look at it, the family relationships like husband-wife relationship or the parent-child relationship or the sibling relationship. But when we are in office, there also our conduct is seen. Okay, our identity is evaluated based on, we are recognized based on our conduct. So it's not only on the biological relations that relationships are seen. Okay. So participation in an institution is also participation in the family institution, and this then becomes the basis of their identity. है ना? तभी परिवार संस्था में, किसी संस्था में भागीदारी भी परिवार संस्था में भागीदारी है, तभी व्यक्ति की पहचान हो पाती है. जागृत मानव परंपरा में परिवार की पहचान अपने आप में संपूर्ण प्रकार से सम्मान संपन्न हो जाती है. In humane tradition, the family in itself is respectively identified because all families are continuous evidence of resolution, prosperity, fearlessness, and coexistence. Okay. So, जागृत परंपरा में परिवार की पहचान अपने आप में संपूर्ण प्रकार से सम्मान संपन्न हो जाती है, क्योंकि हर परिवार में समाधान, समृद्धि, अभय सहअस्तित्व का प्रमाण सदा बना ही रहता है. Because all families are continuous evidence of resolution, prosperity, fearlessness, and coexistence. इससे अधिक उपलब्धि की आवश्यकता नहीं रह गई है. Nothing more than this is needed. सोम भैया बार बार शिविर में यूज करते हैं ये वाली भाषा. इससे कम में चलता नहीं है, इससे ज्यादा होता नहीं है. So this is one place in Wang में, in Madhyas Darshan, where I realized that Babaji is also using this language. So it is not Som Bhaiya is using, so Babaji is using. Actually, Babaji has used, so Som Bhaiya is also using. So nothing more. So less than this is not sufficient, and more than this is not needed. Okay, this is what is called Poorn. है ना? कम अधिक से मुक्त. Okay, less than this is not sufficient, more than this is not needed. Okay, this is the language. So nothing more than this is needed. इससे अधिक उपलब्धि की आवश्यकता नहीं रह गई. यही मानव परंपरा में से के लिए परम लक्ष्य और उपलब्धि है. This is the ultimate goal and achievement in human tradition, by human tradition, for human tradition. इसी में जीवन आकांक्षा, मानव आकांक्षा ओतप्रोत विधि से सफल होना पाया जाता है. It is when जीवन expectation and human expectation are intertwined with this that they are found to be successful. So ये जीवन आकांक्षा, मानव आकांक्षा, ये शब्द बार बार आते हैं. I have a feeling that most of us are already aware and already remember them very clearly. लेकिन I think maybe it may be good to sometimes just refresh them so that sometimes new joinees are also there. So मानवाकांक्षा जो है वो क्या है? समाधान, समृद्धि, अभय सह अस्तित्व. और जीवन आकांक्षा क्या है? सुख, शांति, संतोष.
तो जीवन रूप में सुख शांति संतोष आनंद, मानव रूप में समाधान समृद्धि अभय सहस्त्र। Okay, saying in English, Jivan expectation and human expectation. The difference is Jivan expectation is Sukh Shanti Santoshanam. Okay, happiness, peace, contentment, and bliss. And human expectation is Samadhan Samriddhi Abhay Sahastitva, which is resolution, prosperity, fearlessness, and coexistence. तो समाधान जो है वो मानव रूप में शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। ह्यूमन बींग्स आर कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉडी एंड जीवन। तो मानव रूप में शरीर और जीवन दोनों है, इसलिए शरीर का भी ध्यान रखना है। बॉडी आल्सो नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। ओके, सो वी नीड फिजिकल फैसिलिटीज, वी नीड फिजिकल गुड्स, तो जिसको बाबा जी ने आहार, आवास, अलंकार, ओके, दूरगमन, दूरश्रवण एंड दूरदर्शन, ये 6 चीजें ऐसी बताई। ये सारी इस रूप में वी नीड फिजिकल गुड्स। ओके, तो मानव रूप में when we are with the body, so then the expectation is समाधान समृद्धि अभय सह अस्ति, तो समृद्धि में सारा चीजें जो है वो आ जाती है। जीवन आकांक्षा जो है वो शुद्ध रूप से जीवन वाले पार्ट को हैंडल करना है। इट्स फोकसिंग ऑन द जीवन पार्ट। तो वो वाला जो जीवन पार्ट के साथ में उसको हम फिर सुख शांति संतोष आनंद करें। दिस डिस्टिंक्शन इट्स ऑलरेडी क्लियर आई गेस, बट आई थॉट ऑफ रिपीटिंग इट। ठीक है, बताइए, इज दिस क्लियर? any sharing, any comments, any translation related issues? Otherwise we can proceed to the next paragraph. भैया मैंने एक मैसेज किया है आपको। अच्छा, एक सेकेंड मैं देखता हूँ। नमस्ते भैया, बाबा जी की पहचान तो उनके दर्शन के कारण है ना, प्लीज समझाइए परिवार से बाबा जी की पहचान कैसे? ओके, सो द क्वेश्चन ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश इज दैट बाबा जी's identity is because of this Madhyas Darshan philosophy which Baba ji has given. Okay, now how can we say Babaji's identity is with the family? Okay, so प्रभा दीदी, मैं इसको मतलब ऐसे देखता हूँ कि when we talk about दर्शन only, okay, and if we अगर हम इसको दर्शन को जीने से डिस्कनेक्ट कर दें, if we disconnect the actual living, the conduct part from the philosophy part, then the living is not complete. Then ये अपने आप में ना एक ऐसा लगता है कि सिर्फ एक सोचने विचारने का कार्यक्रम है। It's like an intellectual activity itself, that I am sitting with closed eyes or maybe with open eyes. I have understood everything, I am describing. Is this the identity, or Babaji actually lived with so many people? Okay, within his biological family and mostly outside his biological family also. Okay, and his conduct was sort of very inspiring and very acceptable to everyone who came in contact with Babaji. तो बाबाजी ने हमको समझने के लिए कंटेंट दिया है, मध्यस्थ दर्शन दिया है, ये उनकी पहचान का कारण है ही है, लेकिन इसका एविडेंस जो है वो बाबाजी के लिविंग से आता है, बाबाजी के आचरण से आता है। ये ऐसा प्रभा दीदी मैं इसको देख पा रहा हूं। अगर आदमी हम अपने लिविंग में भी देखें, अपने आसपास भी, इन पीपल अराउंड अस, इफ somebody talks very good, talks very logically, okay, but the living part, उसके जीने में, वो आचरण में वो वाली चीजें नहीं आती हैं, है ना, आचरण उसका ठीक नहीं है, तो फिर हमारे उसकी बात से भी हम कनेक्ट नहीं कर पाते। We find it very difficult to connect with what the person is saying. So the conduct is an important aspect in behavior, है ना। तो सिर्फ कुछ समझ में आया है, या वो जो समझ में आया है वो मैं अच्छे व्यवहार से, अपनेपन के भाव से, मेरे को ऐसा लगता है कि ये मैंने समझा, मेरे काम की चीज थी, बेटा आपके भी काम की चीज है, मैं तुम्हें समझाने के लिए प्रस्तुत हूँ। मेरे को लगता है कि बाबा जी की स्वीकृति में ये दोनों आयाम ही बने ही हुए हैं। इतना ठीक लग रहा है प्रभा दीदी? आप कोशिश करूंगी इसको वापस।
समझने की। दोबारा बोलिए, जोर से हाँ, बोलिए। वापस इसको मतलब मनन करके समझने की कोशिश करूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। नहीं भैया, पूरा कन्वे नहीं हो पा रहा इस बात से, क्योंकि हाँ जी, पहचान की जब बात आ रही है तो पहचान तो आदरणीय नागराज जी की है, उनके यस, परिवार की तो हम मैं अपने जगह देखूं तो पहचान कहाँ है। ठीक है, उनके जीने में पहले परिवार में प्रमाणित होगा, फिर परिवार के आगे सोसाइटी में या पूरा विश्व में प्रमाणित होगा। लेकिन जो दीदी ने क्वेश्चन किया वो मेरा भी अब क्वेश्चन बना था, तो यही है कि पहचान तो व्यक्ति की है, परिवार की कहाँ पे। हाँ, तो व्यक्ति किसी ना किसी परिवार का ही पार्ट है ना। देखिए, परिवार के बिना मानव, दोबारा पढ़ते हैं, परिवार के बिना मानव की पहचान होती नहीं है। हर मानव किसी परिवार का अंगभूत होना पाया जाता है, इसके अलावा कोई पहचान भी नहीं है। किसी संस्था में भागीदारी भी परिवार संस्था में भागीदारी है। ठीक है, तो इसमें ना मेरे को लग रहा है कि एक हम धीरे से अपने में, कृष्ण भाई, ये ध्यान में रखेंगे कि जो अभी तक हम ना परिवार का जैसे ही हम नाम लेते हैं, हमें ना सिर्फ बायोलॉजिकल संबंधों में ही परिवार दिखता है। ओके, ऐसा लगता है कि फैमिली जो है वो बायोलॉजिकल संबंध वाले को हम फैमिली कह रहे हैं। बाबा जी पूरी परिवार व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और बाबा जी ने संबंधों में जीना जो है उसको परिवार में जीने से रिलेट किया है। तो संबंधों में जीने में हमारे गुरु शिष्य संबंध भी इंक्लूड हो जाता है, और हमारे फ्रेंड संबंध भी जो है, मित्र मित्र संबंध जो है वो भी इंक्लूड हो जाता है संबंधों में। राइट, तो मैं अपनी बायोलॉजिकल फैमिली के साथ भी जीता हूं, और बायोलॉजिकल फैमिली के बियॉन्ड भी जीता हूं। सभी को ही अपने संबंधी के रूप में पहचानता हूं। ठीक है, और सबके साथ में संबंध का निर्वाह करता हूं। तो मानव एक परिवार का हिस्सा है, और वो परिवार जो है, वो परिवार उसके बायोलॉजिकल फैमिली से बियॉन्ड है। यही हमारी कल्पनाशीलता में मेरे को भैया ऐसा ऐसा लगता है कि ये वाला अपना एक एस्पेक्ट जो है ना, ये क्लियर होता है दैट माय रोल इज नॉट कॉन्फाइंड टू माय बायोलॉजिकल फैमिली। हम जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, खूब पैसे कमाएंगे, खूब पैसे जोड़ेंगे, किनको देके जाएंगे? अपने बायोलॉजिकल बच्चों को दे करके जाएंगे। हम सब भी, मैं भी अपने को जब इंट्रोस्पेक्ट करता हूं तो धीरे से ये मैं अपने में शिफ्ट होता हुआ देख पाता है ना। आज से 10 साल पहले तक जब मैं देखता था तो पैसे भी कमाने हैं, है ना, पैसे का क्या करना है, ठीक है, कुछ जो है वो अच्छे काम भी किए जाए, लेकिन लार्जली क्या होगा? अपने बायोलॉजिकल बच्चों के। राइट, तो ये बाबा जी ने इसको काफी अच्छे से फैलाया है भैया। ये जब हमको एक बार अपने में स्पष्ट होता है ना, और फिर धीरे से ये अपने जीने में आता भी है। राइट, तो समझ वाला पार्ट जो है वो प्रायोरिटी में आ जाता है, सुविधा वाला पार्ट बना ही रहता है। राइट, तो सुविधा के लिए हर परिवार अपने में काम करेगा ही समृद्धि के साथ में, और समझ वाले पार्ट के लिए सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ में काम कर पाते हैं। तो ये व्यक्ति की भी पहचान बनती है, यही फिर परिवार की भी पहचान। तो मतलब आई डू नॉट नो, मतलब मैं इससे ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहा, लेकिन अगर प्रश्न अभी भी बना हुआ है भैया आपका, तो मतलब आई रिक्वेस्ट कि बाकी सब साथी भी कुछ ना कुछ इसके बारे में रिफ्लेक्ट कर ही रहे होंगे। तो नहीं भैया, ठीक है, आंसर हुआ है। बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर हम सोचते हैं तो ये स्पष्टता बन जाती है। तो अभी तक ना हमने किसी संस्था की भागीदारी को परिवार से अलग माना है। यहाँ पर बाबा जी काफी काफी क्लियरली इस चीज को कह रहे हैं, किसी संस्था में भागीदारी भी परिवार संस्था में भागीदारी। राइट, आप अगर कॉलेज में पढ़ाते हैं, विच आई हर्ड ए फ्यू सेशंस अगो, है ना, यू आर फैकल्टी इन इंजीनियरिंग कॉलेज, नो, you know, the students who are sitting in the classroom, मतलब डू यू फील ए सेंस ऑफ रिलेशनशिप विद देम ऑल्सो और नॉट? हम भी उनको पढ़ाते समय भी भाव के रूप में, जितने भाव के साथ में अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ, उतने ही भाव के साथ में क्लास के बच्चे को भी पढ़ाता हूँ, है ना। क्या ये अपने में मैं देख पाता हूँ? फिर मैं क्या ये देख पाता हूँ कि पूरे इंस्टीट्यूशन में ही ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राइट,
तो इंस्टीट्यूशन में हो क्या रहा है, वो परिवार विधि से चल रहा है या सबका अपना अपना कोई पर्सनल एजेंडा है वैसे चल रहा है। तो काफी संस्थाओं में एक्चुअल में, जैसे थोड़ी देर पहले अपना दीदी बता भी रही थी, शिल्पा दीदी, कि जब हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं या कहीं और भी सिस्टम की बात करते हैं तो एक भाषा ये निकल के आती है दैट द सिस्टम इज नॉट वर्किंग बिकॉज नोबडी हैज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इन माइंड। सबका सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हुए पर्सनल एजेंडा रहता है, राइट। वो टोटलिटी के साथ में, इंस्टीट्यूशन के गोल के साथ में अपने गोल को जोड़कर नहीं देख पा रहे हैं, और फिर इंस्टीट्यूशन के गोल को मानव लक्ष्य के साथ में नहीं जोड़ के देख पा रहे हैं। ये तीन चीजें हैं। मेरा लक्ष्य इंस्टीट्यूशन के लक्ष्य के साथ में जुड़ेगा, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जिस इंस्टीट्यूशन में मैं भागीदारी कर रहा हूं वो मानवीयतापूर्ण काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर वो नहीं कर रहा और मैं इंस्टीट्यूशन को बदलने की अभी मेरी ताकत नहीं है, तो डू आई वांट टू बिलोंग टू दिस इंस्टीट्यूशन और नॉट, ये फिर अपने आप में एक सवाल उठ कर आएगा। तो संस्था में भागीदारी भी परिवार संस्था में भागीदारी, ठीक है। इस तरह से इसको हितेश दीदी ने हैंड रेज किया, प्लीज बताएं दीदी। जब ये वाली लाइन आई ना तो मेरा ध्यान ऐसे गया, आपकी आवाज मेरे को ही कम आ रही है, सबको कम आ रही है। आप थोड़ा जोर से बोल सकते हैं। सबको कम आ रही थी। सबको कम आ रही है दीदी, थोड़ा सा जोर क्लियर से नहीं बोलें। आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, जोर से बोलेंगी दीदी प्लीज। हाँ जी, तो कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो अपने परिवार के को पूरा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा परिवार अलग है और मैं पूरे परिवार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वो पीछे से पूरी व्यवस्था को संभाले हुए हैं, तभी मैं यहाँ पे आके आपके आगे प्रेजेंट हो पा रहा हूँ। और एक चीज वो आता है ना कि होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है, उसमें हाँ ऐसा जी। बोलते हैं कि जब पूरी फैमिली का आप की पूरी व्यवस्था में भागीदारी होगी, तभी एक इंसान का जो मानव का जो रोल है वो परिवार में से कैसे निकलेगा। जैसे वो किडनी वाला एग्जाम्पल देते हैं ना कि कैसे एक सेल को पता कि मुझे किडनी की तरह परफॉर्म करना है, जब उसे ये पता होगा कि किडनी का पूरे शरीर में क्या भागीदारी है। तो जब पूरे परिवार की क्या भागीदारी है पूरी व्यवस्था में, उसके बाद एक इंसान अगर इसमें से कोई सामाजिक रूप में बाहर भी निकल के आ रहा है तो पूरी फैमिली को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं अपनी पूरी फैमिली को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं सामाजिक रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो बाकी सारी व्यवस्था को संभाले हुए हैं, उत्पादन को या जितनी भी बाकी व्यवस्था है उनको संभालेंगे। ऐसा मैं देख पाई। दीदी पता नहीं ये ऐसा रिलेट हो पा रहा है या नहीं, ऐसा हाँ मैं नहीं, देख पाई। आपका काफी कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में आया। शिल्पा दीदी ने हैंड रेज किया है, बताएं दीदी। नहीं, I was just saying, since I can see Spencer, I thought कि we've been talking in Hindi and this is a very interesting topic. So I don't know if you want to explain in English also. That's what I was just saying. Yeah, so I think that Spencer once said that he would like us to talk in English, but he understands that sometimes we will shift to Hindi also. हमारा एक and they are understanding. So we largely talk in English, but sometimes अगर प्रश्न हिंदी में आया है, if the question is in Hindi, probably we will largely speak in Hindi at that time. So हितेश दीदी, देखिए आपका पूरी बात तो समझ में नहीं आई मेरे को, लेकिन मोटा मोटा सा जो मेरे को लगा, आपने वो किडनी वाला भी एग्जांपल सोम भैया का जो है वो याद कराया, तो मेरे को ऐसा लगा कि आप कह ये रहे हैं कि है ना, परिवार भी जो है वो बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करेगा। तो हाँ, वो करेगा ही, लेकिन अब मतलब अपने अपने तरीके से सब करेंगे। अब हर बार जो है वो हर व्यक्ति ही एक बड़ा काम करेगा बाहर जाकर के परिवार में से, या कोई एक व्यक्ति निकलेगा और बाकी घर के लोग, घर की व्यवस्था भी जो है वो चलती रहेगी। तो हर परिवार इसको अपने अपने तरीके से डिफाइन करेगा, जैसी परिवार की आवश्यकता होगी वैसा जो है वो सब सदस्य जो है वो उसको देख करके परिवार की आवश्यकताओं को भी देखते हुए समग्र व्यवस्था में भागीदारी जो है वो करेंगे। अभी जब तक मानवीय व्यवस्था बनती नहीं है
तब तक भी हमें कहीं ना कहीं तो भागीदारी करनी ही है ना। मेरे को लगता है कि ये वाली क्लियरिटी अपने में बड़ी स्पष्ट रहे। अभी हम लोग आज की डेट में देखें तो अपने आसपास हमको काफी अव्यवस्था दिखती है। मतलब हर कंट्री में जो पार्लियामेंट है या पॉलिटिकल लीडरशिप है, दे आर सुप्रीम, दे आर द लॉ मेकर्स। और मैं जितना रोज का अखबार उठाता हूं, एवरी डेज न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ स्टोरीज ऑफ ऑल कंट्रीज where the previous prime minister, the previous president, like either they have been put in prison or some kind of a investigation is going on against them. Okay, so एक प्रधानमंत्री बनता है, एक राष्ट्रपति बनता है, कुछ समय के बाद में वो नहीं रहता है, फिर जो दूसरा आता है वो पुराने वाले के ऊपर केस चलाता है। अभी अव्यवस्थाएं चल ही रही हैं, और सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं है, हम बाजार में जाते हैं तो वहां पर भी एडल्ट्रेशन, ओके, एंड फ्रॉड, और काफी सारा जो है ये हमको वो भी मिलावट का सब कुछ दिखता ही है। ये परेशानियां होते हुए तो अभी व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था है। ऐसे में हमारा क्या रोल है, ऐसे में मेरा क्या रोल, राइट? तो मैं व्यवस्था में भागीदारी करना चाहता हूं, व्यवस्था भी है नहीं, ऐसे में मेरा क्या रोल, राइट? सो ऐसे में अपना रोल दीदी यही स्पष्ट आता है जो बाबा जी ने बार बार कहा है, जागृति से ही समस्याएं सॉल्व होंगी, समझदारी से ही समस्या सॉल्व होगी, इससे कम में होगी नहीं, है ना। अभी हम लोग भौतिकता प्रधान विधि से चल रहे हैं। हम लोगों का घरों का भी कार्यक्रम जो है और सरकारों का भी कार्यक्रम जो है वो जीडीपी और पर कैपिटा इनकम के ऊपर चल रहा है ना। फैमिली में भी हम पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जीडीपी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना नेट बैलेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकारें भी यही कर रही हैं। समझ के ऊपर फोकस नहीं। तो समझ की फोकस होने से धीरे धीरे समझदार लोगों की संख्या बढ़ेगी। यही समझदार लोग कहीं ना कहीं पर व्यवस्था में भागीदारी करने जाएंगे, यही लोग टीचर बनेंगे, यही लोग बैंक में जाएंगे, इन्हीं में से कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी बनेंगे। और फिर आदमी जब समझदार होगा, जब जागृत होगा, तो फिर किसी भी सिस्टम में जाएगा, गलत काम नहीं करेगा। ठीक है, ये फिर व्यवस्था बनने का एक हमारा फ्रेमवर्क जो है ना, वो हमारा इस तरह से तैयार होता है। तो जितना हितेश दीदी आपकी मेरे को बात समझ में आई थी, पूरी तो ऐसा ही सेट समझ में आई नहीं, तो मतलब उसको मैं इस तरह से लेकर। जी शिल्पा दीदी। नहीं, मैं बस वही ऐड कर रही थी जो आपने बोला, जो प्रभा दीदी एंड कृष्ण भैया का भी था कि बाबा जी के परिवार, तो बाबा जी ने जो अनुसंधान किया, लाइक मतलब सबसे, मतलब वो तो हमें प्रमाण दिखता ही है कि उनके परिवार का उसमें कंट्रीब्यूशन था। तो हाँ, पूरा माता सपोर्ट था, तभी वो कर पाए। मतलब हाँ, एंड उसके आगे भी जो उन्होंने इसका व्यापीकरण किया है उसमें भी उनका पूरा सपोर्ट था। तो पूरी बिल्कुल। उनकी आइडेंटिटी हमें उसमें प्रमाणित दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको जितना हम देखेंगे बढ़िया। स्पेंसर एंड एस्टेल, सॉरी वी शिफ्टेड टू हिंदी फॉर सम टाइम। ठीक है, आगे बढ़े क्या? आगे कौन पढ़ेगा यहां से? है ना, प्लीज बारी बारी से पढ़ते रहें, जो लोग हिंदी और इंग्लिश जानते मैं हैं। पढ़ देती हूँ भैया। हाँ नीरल दीदी प्लीज। जी, जीवन आकांक्षा के अर्थ में ही संभवतः साधना अभ्यास, योग, ध्यान आदि को परंपरा में पहचानने का प्रयास किया। इन सारे प्रयासों को प्रयास के रूप में ही देखा गया। इसका फलन लोकव्यापीकरण रूप में देखने को नहीं मिला। यदि जीवन आकांक्षा रूपी सुख, शांति, संतोष, आनंद प्रमाणित हो पाता है, तब समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व प्रमाणित होना अवश्यम भावी होता है। It was probably for fulfillment of Jivan expectation that efforts have been made in human tradition towards sadhana, practice, yoga, meditation or mindfulness, etc. All these endeavors
can be categorized only as endeavors. Their result in the form of widespread expectance is not seen. If Jivan expectance, happiness, peace, contentment, bliss is evidenced, then human expectation, resolution, prosperity, fearlessness, coexistence is clearly evidenced. Thank you, Neeru Didi. So we can now look at it line by line. So जीवनाकांक्षा और मानवाकांक्षा के ऊपर पिछला पैराग्राफ क्लोज हुआ था, उसी पे ही उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जीवनाकांक्षा के अर्थ में ही संभवता है ना, संभवता मतलब बाबा जी से प्रोबेबिलिटी। तो जीवनाकांक्षा के अर्थ में ही संभवतः साधना, अभ्यास, योग, ध्यान आदि को परंपरा में पहचानने का प्रयास किया मतलब किया गया। सो इसको इंग्लिश में कह रहे हैं, इट वॉज प्रोबेबली फॉर फुलफिलमेंट ऑफ जीवन एक्सपेक्टेशन दैट endeavors have been made in human tradition towards sadhana, practice, yoga, meditation. जिसको ध्यान कह रहे हैं हम। Now there are two popular words for this, meditation or mindfulness. I was not sure what to use, so I have used both of them for the time being. So ये जो जीवनाकांक्षा है, इसी के लिए ही जितना भी ये काम हुआ है, इट इज ओनली फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ जीवन एक्सपेक्टेशन, है ना, जिसको सुख, शांति, संतोष, आनंद कह रहे हैं। ये कुछ इनर चीज है, इसमें फिजिकल वाला पार्ट जो है वो जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव परस्यूड दिस पाथ, दे हैव इग्नोर्ड और नेग्लेक्टेड देयर फिजिकल बॉडीज। दे हैव नॉट almost forgotten about eating or sleeping and things like that. This is what we hear, these kind of things. तो उनका ध्यान जो है जीवन पे ही फोकस करते हुए इतना उन्होंने मेहनत किया। So it was probably for fulfillment of जीवन expectation that endeavors have been made in human tradition towards sadhana, practice, yoga, meditation और mindfulness etc. इन सारे प्रयासों को प्रयास रूप में ही देखा गया। All these endeavors can be categorized only as endeavors, है ना, ये सिर्फ प्रयास ही है ना। मतलब what Babaji is saying very categorically, when he is looking at this, he is just looking them as well-intentioned efforts. Okay, so effort is also to be appreciated, but making effort is one thing, and then reaching a result, achieving what we wanted by those efforts, that is quite another. So efforts have been there. Okay, so Babaji is saying all these endeavors can be categorized only as endeavors. Okay, not more than that. इसका फलन लोकव्यापीकरण रूप में देखने को नहीं मिला। Their result in the form of widespread acceptance is not seen. So widespread acceptance, when I look at it, is like, for example, somebody has made a laptop. Okay, some scientist has made a laptop and he says, laptop is very good. Then I realize that yes, laptop is very good. Then I also want laptop. Okay. Someone has made mobile phone and they say this is a very, very good utility to have. I realize it is very good. I want to have it for myself. I want to have it for my family members also. Now, people have done sadhana, samadhi, yoga, ये सब कुछ जो किया है, they have gone to jungle, they forgot to eat food, they deprived themselves of sleep also, and they say that this is very good. Now, do I feel like, yes, this is very good, I also want to do it, I want my family members also to do it. Suddenly we realize that this is not happening. Okay, so this is what is meant by कि लोगों ने कोशिश किया है, किसी ने कुछ किया है, but their result in the form of widespread acceptance is not seen. Okay, the best that has happened is common people have respected the people who pursued those paths.
but they did not feel like themselves pursuing those paths. Okay, this is the difference. हाँ जी नीरो दीदी। मुझे भैया ये जो अभी हम पैराग्राफ कर रहे हैं इसमें एक चीज ध्यान आ रही है बाबा जी का, जो लास्ट वीक हमने पढ़ रहे थे उसमें एक जगह आया था कि कोई भी रिसर्च होती है या कोई भी किसी चीज की स्किल का किसी को ज्ञान होता है तो वो सब में बंटने के लिए होना चाहिए, उसके बारे में सबको पता होना चाहिए, अपने तक नहीं रख लेना चाहिए। तो ये मुझे ना कुछ वैसा ही लगा कि एक तो ये हुआ कि जिनको ज्ञान हुआ या जिन्होंने ये सब किया वो उसको दूसरों तक पहुंचा नहीं पाए। जैसे आपने कहा कि लैपटॉप बनाया, अच्छा किसी ने लैपटॉप बना लिया, अब वो अपने लिए रख ले और उसके दूसरे लैपटॉप्स नहीं बने, तो जो चाह रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए, हम भी यूज कर सकते हैं, उनके पास अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है कैसे बनेगा। तो ये मुझे वहां से रिलेट करता हुआ दिखा कि ऐसा ही हुआ एक्चुअली, कि हो तो गया बट उसकी एक विधि, उसका एक तरीका वो नहीं लोगों के उसमें आया। I don't know, but दीदी इसको ना like instead of talking about other people, we have to personally look it in at our lives also. But for example, let us assume that there is some person, okay, who has achieved all this, ये जो भी हम ये साधना समाधि या साधना योग और ये सब कुछ जो उसने कर लिया, and like I mean all this they have done by spending 10 years 20 years in mountains or like depriving themselves of or very very low dependence on physical facilities, and they say that देखो हमने इतना मेहनत किया and we found this is very good, you can also do this mehnat, this hard work, and you will also achieve this, and we can tell you, we can guide you properly. Are we willing to do that? Both the things are required actually. The willingness is required and then the availability की हो सकता है। Okay. कोई method है, कोई so I तरीका will है, come कोई back जो to, I चीज़ will मुझे ask, ये I will again ask point blank questions. Assume that there are some people like that who have done these kind of spiritual journeys in a hard way and they are willing to share with you the process. Okay. Do I want to do it and do I want to encourage my children to do it? या मैं जब दर्शन के संपर्क में आई तब मुझे पता चला कि ओके देयर इज समथिंग व्हिच आई कैन डू, राइट। मैं अपने बच्चे देखूं अगर तो बच्चे स्वीकार, आजकल इतना अवेलेबिलिटी इतना ज्यादा हो गई है चीजों की, दे कीप ऑन स्टडीइंग द थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल। ओके, आपकी आवाज कट गई, क्योंकि अवेलेबिलिटी है सो दे आर इनटू इट, वो खोज अवेलेबिलिटी हो जाती है बहुत ज्यादा, तो बहुत लोग उस तरफ बढ़ते भी हैं। जैसे अभी मैं अपनी बात कर रही थी तो मैं ये कह रही हूँ कि मैंने नहीं कोशिश की कभी, है ना। जब मेरे एकदम मैं कहूंगी मेरी झोली में आके कोई चीज गिर गई तो मुझे देखने का मन किया कि अरे हाँ मुझे देखना चाहिए। बट आज जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों का मैं सुनती हूँ कि वो दे आर इनटू इट, वो कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हैं क्योंकि बहुत कुछ अवेलेबल है आजकल। तो ये सारा ना अपने में देखा जाए, मतलब दीदी तो विलिंगनेस एंड द अवेलेबिलिटी बोथ आर रिक्वायर्ड, है ना। सो इवेंचुअली जो है इसका हमको वाइड स्प्रेड एविडेंस, वाइड स्प्रेड एविडेंस जो दीदी, मतलब देखिए अगेन ये साधना समाधि का पर्पस क्या था कि ह्यूमन कंडक्ट जो है वो इम्प्रूव हो जाए, है ना। सो ये सारा अगर हमको ये दिख भी रहा है कि अब लोग मेहनत भी कर रहे हैं, तो क्या हमें अपने आसपास चीजें ठीक होती हुई भी दिख रही हैं क्या, है ना। इवेंचुअली दैट इज द एविडेंस, है ना। सिर्फ कुछ, है ना। तो मतलब हम ये कहें कि हाँ भाई, अब जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर ही रहे थे, है ना, हम बाजार में जाते हैं तो चीज मिलावटी हो जाएगी, कोई हमारे साथ में धोखाधड़ी करने के लिए बैठा ही हुआ है, डरे तो हम हुए ही हैं,
तो एविडेंस के रूप में हमको क्या दिख रहा है? अगर लोग इस सबको परस्यू कर रहे हैं और परस्यू करने से उनको अच्छी अच्छी बातें पता चल गई, एंड वी हैव द नंबर ऑफ गुड पीपल इज इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, डू वी फील इट इन अवर सेल्स? डू वी फील लैक ऑफ फियर इन अवर सेल्फ? है ना? तो अपने आसपास या अपने अंदर भी ये ना दीदी, ये बार बार ये रिफ्लेक्शन अपने में, इट्स इंपॉर्टेंट दैट इट कंटिन्यूस, बिकॉज जब तक हमारे निष्कर्ष के रूप में चीजें ठीक, देखिए 2 निष्कर्ष निकल सकते हैं। 1, यस, ऑलरेडी पीपल आर ऑन द राइट पाथ, है ना? इफ पीपल आर ऑलरेडी ऑन द राइट पाथ, देन देयर इज नथिंग मच दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, राइट? लेकिन if people are already on the right path, or more and more people are going on the right path, then things must be improving also. Do we get that feeling that things are improving? है ना? इसको ही सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं कि इसका जो है रिजल्ट इज इन द फॉर्म ऑफ वाइड स्प्रेड एविडेंस, एक्सेप्टेंस एंड एविडेंस इज नॉट सीन। ये जो है इसका लोकव्यापीकरण जो है वो नहीं हो पाए। लोगों ने रेयरली मेहनत की है, मेहनत करके क्लेम किया है कि मैंने कुछ पाया है, उस पाने के बाद में वो उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो पब्लिक तक होती तो पब्लिक भी वो करती, है ना? लेकिन वो पब्लिक तो करती हुई नहीं दिख रही है। दिस इज व्हाट बाबा जी से, राइट, है ना? तो बस इसको जो है वो बार बार अपने में रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। यदि जीवन आकांक्षा रूपी सुख, शांति, संतोष, आनंद प्रमाणित हो पाता है, तब समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व प्रमाणित होना अवश्यम भावी होता है। इफ जीवन एक्सपेक्टेशन, हैप्पीनेस, पीस, contentment, bliss is evidence, then human expectation, resolution, prosperity, fearlessness, coexistence is certainly evidenced, है ना? तो ये सब लोग जीवन एक्सपेक्टेशन के पीछे चले थे। जीवन एक्सपेक्टेशन अगर उसका एविडेंस मिलता या मिलेगा जब भी, तो ह्यूमन एक्सपेक्टेशन का भी एविडेंस मिलेगा। फिर हमें लगेगा कि लोग समझदार हो गए हैं, फिर हमें लगेगा कि लोग समृद्ध हो गए हैं, फिर हमें लोग, people are resolved, and more and more families are living in a prosperous manner. We are getting a feeling of fearlessness in more and more cities and countries, and the feeling of coexistence is also there. Right now I see, at least in our environment, many people, when their children are becoming of marriageable age, many years pass, they are not able to find the appropriate match. Like, I mean, they look at dozens of people, hundreds of people, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, बड़े भी मेहनत कर रहे हैं, वो सालों साल निकल जा रहे हैं, एक भी ढंग का परिवार नहीं मिल रहा। मतलब मिल जाते तो शादियां भी हो रही होती दीदी, है ना? मैं इसको प्रैक्टिकली, ये जितना डिले हो रहा है वो ह्यूमन एक्सपेक्टेशन के रूप में, मानव जो है वो, जब आदमी को सही में मानव चाहिए होता है बच्चे की शादी के टाइम पे, तो मिल ही नहीं रहे हैं परिवार। हम सब ने अपने आसपास देखा ही है कि शादियां होना कितना मुश्किल सा काम हो गया है ना? और जहां पर हो जाती हैं वो फिर उनमें से काफी ज्यादा जो है वो, द नंबर ऑफ ब्रेकअप्स वी आर सीइंग, दे आर आल्सो इंक्रीजिंग, राइट? तो एविडेंस के रूप में नहीं दिख रहा। तो ये जीवन एक्सपेक्टेशन जब भी प्रमाणित होगी, वो ह्यूमन एक्सपेक्टेशन भी हमको प्रमाणित होगी। ऐसा नहीं होगा कि जीवन एक्सपेक्टेशन तो हो गया प्रमाणित और ह्यूमन एक्सपेक्टेशन जो है वो भी प्रमाणित नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। आदमी समझदार होगा तो इवेंचुअली अभय का प्रमाण मिलेगा ही, फियरलेसनेस का, विश्वास का प्रमाण मिलेगा। सडनली 2 participants raised their hands. कौन है? दिव्य एंड नीरू। तो पहले दिव्य से सुन लेते हैं। दिव्य, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, गुड, थैंक यू। अच्छा, ओके, अच्छा, ओके। शिल्पा दीदी, आप कुछ कहना चाह रही? No, it was very interesting what you raised about marriage, because I think Som Bhaiya ke Shivir mein bhi he mentioned, ki marriage society, like you can see the true mirror of society when you look for a partner for your children, because then we see what are we evaluating also, whether वही रूप भल धन पद ना, मतलब जो हम इसी को evaluate करते हैं। And of course, जैसे आपने बोला कि we are not able to find the correct families
all the correct candidates for marriage. So it's a very, very important, you know, this thing, aspect of, you know, our living. अच्छा ध्यान आकर्षण है ये, बिल्कुल. है ना? तो इस बढ़िया हो गया, है ना? ये फियरलेसनेस जो यही है दीदी, ये इवेंचुअली सोसाइटी में हम फियरलेसली रह पा रहे हैं या वी आर लिविंग विद फियर? ये जो है ये बड़ा अच्छा जो है, ये मानव आकांक्षा के रूप में हम इसको हमेशा से याद रखें सोसाइटी में. मतलब ये जब बच्चे की शादी होनी है तो वो बच्चा भी चाहता है कि भैया ये जहाँ पे जाऊंगा वहां पे विदाउट फियर रह पाऊं. हम भी चाहते हैं कि विदाउट फियर रह पाए. वो वाली फीलिंग आ नहीं रही है. बढ़िया. और कोई, आई सॉ ए कपल ऑफ हैंड्स रेज्ड, लेकिन अब मैं आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ किस किस का था. तो किसी का भी मन. हाँ कृष्ण भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भैया बहुत ही अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल लिया आपने इस कंटेक्स्ट को समझने के लिए, क्योंकि जब ये एक्चुअली क्रूशियल एग्जाम्पल है और एक क्रूशियल सिचुएशन है. जिनके भी बच्चे बड़े हैं, शादी के लायक हैं, तो बच्चे के लिए भी एक इस तरह की सिचुएशन बनी और पेरेंट्स के लिए भी. तो इस उदाहरण से, इस एग्जाम्पल से इसको पूरे कंटेक्स्ट को समझना बहुत आसान हुआ. पर्टिकुलरली जो फियर वाली स्थिति है किसी भी और परिवार से जुड़ने में या अपनी बेटे की या बिटिया की शादी करने में, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जब जो गुजरता है तो इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ पाता भैया. ये बिल्कुल फैक्ट है कि आसान काम नहीं रहा, एक चैलेंज बन गया इवन आज के टाइम पर. और सिर्फ शादी करना ही ऑब्जेक्टिव नहीं है, शादी चलती भी रहे ये भी ऑब्जेक्टिव है. उनका निर्वाह सुखपूर्वक हो पाए, ठीक से हो पाए, वो बड़ी बात है भैया. शादी करना तो फिर भी आसान हो जाता है, लेकिन उसमें वही पॉइंट हम कंसीडर करते हैं कि आपस में इन परिवारों का, दोनों व्यक्तियों का निर्वाह ठीक से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. और हम देख रहे हैं विद इन 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, आजकल तो विद इन 6 मंथ्स पे या वापस डिवोर्सेस तक हो रहे हैं. जबकि सब कुछ देखिए, इट इज इम्पोर्टेंट टू रियलाइज this is not only India specific problem, this is a universal problem. You know, yes. You have joined these sessions only, you know, maybe the last 3, 4 or 5, 6 sessions. I think in one of the previous sessions a few months ago, Spencer and Estelle, who are living in Canada, who are part of this meeting today also, you know, Spencer shared very interesting thing. He said that you know, जैसे हम इंडिया में जब शादी होती है तो एक you know, in all the rituals of the marriage there is a feeling कि भाई हम पूरी सिर्फ इसी शरीर यात्रा में नहीं, 7 जन्म तक साथ में रहेंगे और ये सब कुछ जो है, ये सिर्फ इंडिया में ये वाला नोशन नहीं है. इट इज इन ऑल कल्चर्स. So when in Christianity people get married, a couple gets married, वहां पर भी जो है ना एक इस तरह से कसम के रूप में ऐसा बोला जाता है, till death do us apart, है ना. जब तक हमको मौत जुदा नहीं करेगी, हम पति पत्नी के रूप में साथ में रहेंगे. ये क्रिश्चियनिटी में जो है, यू नो, मतलब ये भी एक इस तरह से उनके भी मैरिज वॉज में ये वाली चीज आती है. तो स्पेंसर वाज शेयरिंग दैट ए लॉट ऑफ youngsters nowadays when they are getting married, you know, in Americas, they tell the priest not to say out loudly this phrase, क्योंकि जो शादी कर रहा है उसमें ये श्योरिटी है नहीं कि भैया मैं मरते दम तक इसको निभा पाऊंगा कि नहीं निभा पाऊंगा. लेकिन यू नो, लेकिन अपने अंदर की एक गुडनेस जो है, अपने अंदर का एक अच्छापन जो है, वो उसको ये भी लगता है कि भैया मुझे झूठी कसमें भी नहीं खानी है. राइट. तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कसम खा लो, नोइंग वेरी वेल कि देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ये पूरा नहीं निकल के आएगा, आदमी को ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो प्रीस्ट को कह देते हैं, डू नॉट से आउट दिस थिंग व्हेन द मैरिज रिचुअल्स आर गोइंग ऑन. राइट. तो साथ में जी पाए पति पत्नी, ये चाहना हर कल्चर में हमेशा से रही, वो जी नहीं पा रहे हैं, ये भी हर कल्चर में रियलिटी है ना. ये इसको जितना हम टोटलिटी में देखें, मतलब ऐसा ना लगे कि हमारे इंडिया में ऐसा हो रहा है कि शादियां ठीक से नहीं हो रही हैं, कहीं पर ठीक से नहीं हो रही है. एक्चुअल में जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर दिस प्रॉब्लम इज मोर वाइड स्प्रेड, है ना. डिवोर्स रेट्स, जिसको हम हैप्पी कंट्रीज कहते हैं,
you know, a lot of teachers from India, they have not from India, from Delhi, they have gone to Finland for educational tours, and when they came back, they told us stories about, you know, it is one of the happiest countries and their education system is excellent. Then I did some research on Finland. Okay, so what I realized was, you all can do this, you all can verify this. Just put a Google search, Finland divorce rate. Okay, so there is official government statistics which say that the divorce rate in Finland is 56%. Okay. So if Finland is a small country, its population is around 4 or 5 million. They have around 25,000 marriages every year, and they have 14,000 divorces every year. Okay, so 25,000 marriages, 14,000 divorces, it translates to something like 56% divorce rate. Okay, now this is the happiest country, or one of the happiest countries. Okay, education system is very good, but husband and wife are unable to live together in society. साथ में रह पाते तो डिवोर्स तो नहीं होता, साथ में नहीं रह पा रहे हैं इसीलिए डिवोर्स हो रहे हैं. Right? तो ये हमारे ना yardsticks of wisdom, yardsticks of development, yardsticks of education, all of them also we need to critically examine कि हम इसको कैसे देखते हैं. तो शादी की बात हो रही थी, तो I sort of, you know, took liberty of narrating that example which Spencer had shared a few months earlier. ठीक है कृष्णन भाई, पहुंचा आप तक? यस भैया, यस, थैंक यू. ठीक है, good. I don't know, whenever we talk about marriage, there are always, you know, बड़े मामला गंभीर हो जाता है. सबके बच्चे बड़े हो रहे हैं, and I think that everyone is concerned about these issues, which rightly so actually. क्या करें? It's a long paragraph. एक काम करेंगे, we can review line by line in the next meeting, but we can actually do its reading. So one of you can read it in Hindi and English. That will be good. वंदना दीदी आप पढ़ेंगी अगर आवाज आ रहा तो? भैया मैं पढ़ने की जरा ना उसमें नहीं हूँ अभी. अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दीदी. नेक्स्ट टाइम हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ममता दीदी, मैंने फोन से ज्वाइन कर रखा है, तो फोन पे इतना वो दिखता नहीं है, क्लैरिटी से पढ़ा नहीं जाता. ठीक है, आई अंडरस्टैंड. मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए भैया, पढ़िए. कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से ना, समझदारी से संपन्न होने के क्रम में है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलेंद्र भाई पढ़िए. समझदारी से संपन्न होने के क्रम में ध्यान पूर्वक ही सफल होना पाया जाता है. ध्यान पूर्वक सफल होने का तात्पर्य हम जो कुछ भी शब्दों को सुनते हैं, सटीक सुनने में स्मरण तंत्र तक पहुंचना पाया जाता है. यह नर नारियों नहीं आती. ये सटीक सुनने का तात्पर्य मन लगाकर सुनने में ही है. मन को लगाए रखना ही ध्यान का तात्पर्य है. मन हर नर नारियों में उद्देश्य के साथ लगना देखा जाता है. इसका तात्पर्य उद्देश्यों का होना पहले से ही स्वीकृत होना आवश्यक है. जैसे मानव का अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, गाड़ी घोड़ा, पद पैसा सम्मान का उद्देश्य बनता है, उसी क्रम में समझदार बनने का उद्देश्य भी स्वाभाविक है. जैसे समझदारी के पहले जितने भी मुद्दे बताए हैं, सबको मानव अपने उद्देश्य में स्वीकारना अभी तक सर्वेक्षित है. ये सर्वेक्षित है कि समझदारी की अपेक्षा छोटी आयु से ही प्रभावशील रहती है. कुछ आयु तक पद पैसा सम्मान को लक्ष्य बनाकर जैसा भी आदमी जूझता है, अच्छे बुरे तरीके से कुछ पाता भी है, होता भी है. इस क्रम में हम चलते हुए कोई ना कोई ऐसी जगह में पहुंचते हैं जिसके आगे हमको ज्ञान विवेक सूझता नहीं है. इसी का नाम है काला दीवाल. जिसे हम लक्ष्य पर बनाए थे, उसे पाने के बावजूद समस्या शेष रह गई. इसका मतलब है हमारा लक्ष्य सही नहीं था, अतः लक्ष्य पर पुनर्विचार की आवश्यकता बनती है.
इसके अभाव में मानव संकटग्रस्त होता ही है। संकट से छूटना हर व्यक्ति चाहता है, इसलिए हम ज्ञानावस्था के मानव ऐसे लक्ष्य को पहचान लें जिससे सदा सदा के लिए सर्वतोमुखी समाधान अर्जित होता रहे। It is only when one is mindful in within bracket or pay attention that one becomes accomplished with understanding what it means, it whether we hear within bracket as words, it reaches भैया नीचे करना पड़ेगा ठीक है. It teaches our memory system provided it is heard attentively. Hearing attentively mean mindful listening. Being mindful is nothing but paying attention. All human, male and female, are mindful only if the topic is aligned with their goal. It clearly indicates that goals are already there, are accepted beforehand. For example, good clothes, good food, car, position, money, respects are some common goals. In a similar manner, to understand is also a natural goal. It has been seen that so far all the goals mentioned here, except understanding, are acceptable to humans. It has also been seen that the acceptance of understanding exists since childhood. Up a point, people struggle for the goal of status, money, and respect. Money and respect. By hook or by crook, sometimes they get it, sometimes knowledge or wisdom to guide or regarding the way forward. If we are not satisfied after achieving whether we assume to be our goal, it clearly means that our goal itself was not correct. So the goal needs to be reviewed. Problem persists if it is not done. All humans want to get rid of problem. Therefore, it is important to that we humans belonging to the knowledge order recognize the goal which ensure all round resolution forever. Thank you, Shailendra bhai. बढ़िया हो Thank गया. you. Okay, so, I mean, briefly, I think we cannot do it line by line because it will take quite some time. But very briefly, like whatever we do is for some goal, for achievement of some goal. So what Babaji is saying in this paragraph is that so far, most of the goals have been like good clothes, good food, car, position, money, respect are some common goals. In a similar manner, to understand or to be wise is also a natural goal. समझदारी जो है हिंदी में उसको समझदारी शब्द बोला, समझदारी भी एक गोल है. To understand is also a natural goal, and this is something which is totally new. Like in my life I also thought that everyone has to be wise, लेकिन वो wise का कुछ करना है, मतलब it has to be a specific program in a family or in any institution. That clarity was not there. Okay, so why being wise or to understand what is understanding was a very abstract or very vague kind of term. So here we have Madhyas Darshan provides us that absolute clarity about what is the content of understanding and how we can achieve it. So if this becomes a goal, then we become wise by understanding, and then we live according to that understanding. Then we do not face problems. So then we are able to achieve the human goal. In absence of that, whatever we are doing is causing problems only for ourselves as well as for others. तो ये इसका एक मेन briefly जो है its essence of this paragraph is like this. What we'll do is in the next meeting we will look at it line by line.
Okay, so we can close it here and can say next will be 20th August. So any closing comments, remarks, sharing, questions from anyone? अभी थोड़े पहले जो बात कर रहे थे वहां पर मुझे ये समझ में आ रहा था कि बाबा जी जो कह रहे थे, कहना चाहते हैं वहां पर कि समाधि देखो अगर आप मेरे तरीके से भी करोगे तो वहां तक पहुंच पाओगे, इस बात की गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ। उस तरीके से आप तब ठीक हो जाएगा, ये मेरे को ऐसा लगता है वहां पर ये सेंटेंस कहा गया है। देखिए वो एक अलग बात है, यहाँ पर तो ये नहीं कहा गया है, मतलब जितना हमने पढ़ा तो भैया अगर तुम करोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा, ऐसी भाषा नहीं आई है पढ़ने में, ऐसी भाषा नहीं। हाँ। है ना। मतलब कहीं और बाबा जी ने अपने डायलॉग्स वगैरह में जिस भी तरीके से कहा है वो हमने, उन बाबा जी ने कुछ कहा, हम सब ने भी अपने अपने कुछ अनुमान लगाए हैं, उसका इंटरप्रिटेशन। लेकिन यहाँ पर बेसिकली इतना ही कह रहे हैं कि a lot of people have made efforts throughout history since thousands of years ago. Okay, and then it looks like we, common people have accepted that these people achieved something, but its widespread evidence is not seen. Okay, like if it was so good, then we would have seen progressively the number of people increasing who have developed the understanding, as well as their conduct has also become better. But that is missing in our society. On the contrary, since our childhood till now, we are realizing that things around us are progressively deteriorating. Okay. So what is that wisdom which some people claimed they have found, but its evidence is not seen, and its evidence is required because all of us want things to be good around us. वो क्या मिसिंग है, ये वाली जो है, इतनी बात हुई थी भैया, एविडेंस मिसिंग है मुद्दा ये। ठीक है। So I think good, we can close the second here, and we meet again on 20th August, same time, Sunday morning, India time. Thanks for joining. Namaskar. Namaste. Namaste. Thank you. नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। थैंक यू भैया। Namaste.